You can write down your objectives in the chat box. Okay. The question is, dash account shows department wise profit or loss. Which account shows department wise profit or loss? जनरल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? Departmental profit and loss account shows department wise profit or loss. Answer is departmental profit and loss. Freight outward is allocated on the basis of dash of each department. Freight outward is allocated on the basis of dash of each department. Freight outward means carriage outward. कौन से basis पे हम allocate करते हैं? What is the basis? What is the ratio? Everyone should answer. ये पेपर में आने वाले questions है that I am discussing. Sales. Put it on the chat box. Sales ratio. Carriage inward is allocated on the basis of dash. Carriage inward कौन से basis पे allocate करते हैं? Carriage inward कौन से basis पे allocate करते हैं? Carriage inward कौन से basis पे allocate करते हैं? Purchase basis पे. Purchase ratio. Very good. Staff welfare expenses are allocated on the basis of dash. ये हमने कभी किया नहीं है. Staff welfare expenses are allocated on the basis of dash. Staff welfare expenses are allocated on the basis of dash. स्टाफ वेलफेयर जो नया पॉइंट आता है ना उसको लिख लो, ठीक है. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स. कौन से बेसिस पे एलोकेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स. जितने वर्कर्स होंगे उतना वेलफेयर एक्सपेंसेस ज्यादा होगा. तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स. Next, cost of HR department is allocated on the basis of dash. ऑप्शन दिखाऊं मैं आप लोगों को? एरिया ऑफ डिपार्टमेंट, एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स, नन ऑफ द अबव. कॉस्ट ऑफ HR डिपार्टमेंट. HR डिपार्टमेंट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको HR लोग लगेंगे. नीलम खान ने आंसर दिया है which is right, number of workers. Rent, rates and taxes are allocated on the basis of dash of each department. Rent, rates and taxes are allocated on the basis of dash of each department. Area. Freight inward is allocated on the basis of dash. Freight inward is allocated on the basis of dash. Freight inward, outward नहीं.
Inward is always related to purchase and outward is always related to sales. Sales. Purchase ratio is Purchase ratio. Rate outward. Rate outward. sales. Sales ratio. Expenses traceable with the departments are called dash direct income, direct expenses, welfare expenses, or none of the above. Expenses traceable with the department are called dash direct income, welfare expenses, direct expenses, none. इसका मतलब जो expenses directly दिए रहते हैं department wise उसको क्या करेंगे? जल्दी बोलो. They are called as direct expenses. Very good. Departmental net profit is transferred to dash. Departmental net profit is transferred to dash. मैम बैलेंस शीट. नहीं. नहीं. कहाँ जाता है? General profit and loss. General profit and loss कहाँ जाएगा? It will go to general profit and loss account. Next. Depreciation is allocated on the basis of dash. Depreciation is allocated on the basis of dash. Huh? Depreciation is related to asset value. So it should be divided on the basis of assets. Depreciation is allocated on the basis of asset value. Welfare expenses are allocated on the basis of welfare expenses are allocated on the basis of welfare expenses are allocated on the basis of number of employees, yeah, number of workers. Departmental expenses may be dash or dash, direct, indirect, office or factory, fixed or flexible, none of the above. बोलो. Direct expense, departmental expenses may be dash or dash. Departmental expenses may be dash or dash. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली गिवन कि ये डिपार्टमेंट का इतना है, ये डिपार्टमेंट का इतना है. और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब होता है कि डिपार्टमेंट वाइज आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है, अलोकेट करना पड़ता है. डिपार्टमेंट true or false? Departmental accounts are necessary for evaluating departmental efficiency. True or false? True. डिपार्ट टी लिखो खाली, टी या एफ. Depreciation on plant is divided equally over different departments.
Depreciation on plant is divided equally over different departments. Equally divide करेंगे, बेसिस नहीं है आपके पास उसका. False. Depreciation on plant किस basis पे divide होता है? On the basis of value of plant. Bad debts are charged to general profit and loss account. Bad debts general profit and loss account में जाता है या departmental profit and loss account में जाता है? Bad debts कहाँ जाता है? Bad debts कहाँ ट्रांसफर करते हैं? Are charged to general profit and loss account or departmental profit and loss account? False. It goes to departmental profit and loss account and is divided on the basis of sales ratio. Management expenses are charged to general profit and loss account. Management expenses कहाँ जाता है? Management expenses are charged to general profit and loss account. True या false? Management expenses false के true? सोचो और बोलो. Management expenses मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अगर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं हो सकता तो इट गोज टू जनरल पीएनएल. चलो नेक्स्ट. Welfare expenses should be charged to department on the basis of number of workers in each department. True or false? Welfare expenses should be charged. Welfare expenses should be charged. True. Rent of premises. Sorry. Stock reserve for unrealized profit for interdepartmental transfer of goods is charged to general profit and loss account. This is something that we haven't done. Stock reserve होता है अगर आप if you transfer goods to another department at profit तो फिर उसमें एक अनरियलाइज प्रॉफिट का पार्ट होता है. अगर वो गुड सेल हो गए तो ठीक है, अगर वो गुड स्टॉक में है तो देयर इज सम अनरियलाइज प्रॉफिट and that unrealized profit lying in closing stock is called as stock reserve. तो ये stock reserve को कहाँ दिखाते हैं? तो it is shown in general profit and loss account. True or false? So yes, it is shown in general profit and loss account. Okay. Trade inward is allocated on the basis of sales of each department. Freight inward is allocated on the basis of sales of each department. Freight inward कौन से रेशियो में जाता है? Freight inward सेल्स में जाता है या परचेज में जाता है? नंदिनी, तन्वी, Purchase. इधर सेल्स दिया तो it is false. Rent of premises is allocated on the basis of number of employees of each department. Rent number of employees के basis पे होता है या एरिया पे होता है? False है. Cost of insurance is allocated on the basis of purchase of each department. Insurance cannot be on the basis of purchase, so false. Loss by fire in a department is treated as expenditure of that department. True. Depreciation is apportioned equally among all the departments. True या false? Depreciation is apportioned equally among all the departments. True या false?
फॉल्स। डेप्रिसिएशन कौन से बेसिस पे एलोकेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट, lighting charges are allocated on the basis of horsepower of machine in each department. लाइटिंग चार्जेस हॉर्स पावर से कैसे रिलेट हो सकता है? लाइटिंग चार्जेस किससे रिलेट हो सकता है? लाइटिंग चार्जेस किससे रिलेट होता है? लाइटिंग चार्जेस आप किससे रिलेट करोगे? इलेक्ट्रिसिटी। लाइट पॉइंट से, करेक्ट। पावर इज allocated on the basis of horsepower of each machine. Power is allocated on horsepower. True या false? नैन्सी ध्यान से देखो, पावर is allocated on the basis of horsepower. True, it has to be true. Others are sleeping or what? All expenses are allocated among the department on the basis of turnover. Turnover का मतलब क्या होता है पहले वो बताओ. All departments are allocated among the department on the basis of turnover. What do you mean by turnover? All expenses are allocated among the departments on the basis of turnover. Turnover का मतलब बोलो. Turnover means what? Turnover means sales. Turnover means sales. Turnover means sales. Turnover means sales. सारे expenses हम sales पे ही allocate कर देते हैं क्या? False. Contribution to a PF is allocated on the basis of number of employees of each department. Contribution to PF is allocated on the basis of number of employees in each department. Contribution to PF is allocated on the basis of number of employees. नहीं, PF contribution is depending on, contribution will be dependent on contribution to PF is dependent on wages or salary. किस पे dependent होता है? Salary पे. It is not dependent on number of employees. Number of employees पे नहीं depend होता है.
Cost of stores department is allocated on the basis of purchase of each department. Stores means additional expenses. स्टोर्स मीन्स क्या होता है ना, कंज्यूमेबल, छोटी मोटी चीजें, स्क्रू ड्राइवर, फेविकॉल, ऐसे छोटी मोटी चीजें. So it is true or false? Stores, yes, on the basis of purchase, true. Factory expenses are allocated on the basis of material purchased. Yes. अभी हम लोग ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं. दीज आर ऑल रिपीटेड क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन बताओ. अ सेपरेट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर. Yes, separate balance sheet is prepared for each department. False. We have general balance sheet, one balance sheet for the whole business. Chalo, now let us see again MCQs. Items of expenses not connected with any department are charged to which department? जो department wise allocate नहीं हो सकता है, जो डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफर नहीं, जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? जल्दी बोलो. Item of expenses which cannot be divided or which cannot be is which are not connected to department, कहाँ डालते हैं उसको हम लोग? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कौन से अकाउंट में करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. Yes, ma'am. Supervision charges should be apportioned over different departments on the basis of time devoted for supervision, area occupied, sales of department. किस बेसिस पे होना चाहिए सुपरविजन चार्जेस? टाइम डिवोटेड फॉर सुपरविजन, एरिया ऑक्यूपाइड और सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. टाइम. यस, करेक्ट.
सेल्स रेशियो इज यूज फॉर अलोकेशन ऑफ, सेल्स रेशियो कहाँ यूज करते हैं? इनकम टैक्स, बैड डेब्ट्स, डेप्रीसिएशन, इनकम टैक्स, बैड डेब्ट्स, डेप्रीसिएशन, बैड डेब्ट्स. Following is not allocated in the ratio of number of employees. इसमें से कौन सा आइटम है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से नहीं जाएगा? बोनस इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, सैलरी इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, रेंट इज इट रिलेटेड टू एम्प्लॉय? तो रेंट is an item which will not be allocated on the basis of number of employees. Okay. Advertising expenses are allocated on the basis of, advertising expenses are allocated on the basis of sales ratio. Advertising are allocated on the basis of sales ratio. Yes, this is what you have in departmental accounts. इतना ही है आपके departmental accounts में. So आप लोगों को departmental accounts के objectives समझ में आ गए. I hope so you are clear with departmental objectives. Yes or no? Yes, no. Put if we are clear कि क्या पूछा जा सकता है, put answer yes. If we are not clear, put no. Okay. Now the next topic that we'll be starting would be, I'm just giving you a hint of the next topic. थोड़ा उसका basics बता रही हूँ कि क्या करेंगे हम लोग next topic में. Next topic is again theoretical topic, that is income and expenditure. Sorry, capital and revenue expenditure. This is our next topic. ये सारी files मैंने आप लोगों के साथ already share की हुई हैं. I've shared all these files with you. आप लोगों को मिली हुई है ये सारी फाइल्स. सो जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैं पूछूंगी वो उसी फाइल से पूछूंगी. पेपर में इसमें से 25% आएगा, 75% you have to use your brain. Okay. Now today we are starting with the new topic, that is capital and revenue expenditure. First of all, tell me what do you mean by expenditure? चलो बोलो. What do you mean by expenditure? Expenditure means expenses. Wow, very nice. प्रणव, आपने मुझे हिंदी एक्सपेंडिचर का शॉर्टकट बताया. The action of spending funds. Correct. Expenditure means
एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश, आपके जेब में से कैश निकल के किसी दूसरे के जेब में जाता है। क्यों जाता है? उसका पर्पस क्या है? फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, या तो आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, आर यू परचेजिंग सम गुड्स, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, और फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज। देखो, expenditure means outflow of cash। अब ये आउटफ्लो ऑफ कैश क्यों किया आपने? आउटफ्लो ऑफ कैश किया आपने फर्स्ट टू परचेज एनी गुड्स और सर्विसेज, और टू एक्वायर एनी एसेट। एक्वायर का मतलब होता है परचेज। अभी ये कॉमन वर्ड होगा जो मैं बहुत बार यूज करूंगी, एक्वायर एनी एसेट। अगर कोई एसेट परचेज करना है तो भी कैश देना पड़ेगा। और फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी, डिसबर्समेंट मीन्स पेमेंट, डिसबर्समेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। सो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश। और वो आउटफ्लो ऑफ कैश क्यों कर रहे हैं हम? आइदर टू परचेज एनी गुड्स और सर्विसेज, आप कोई गुड्स या सर्विसेज लेना चाहते हो इसके लिए। टू एक्वायर एनी एसेट, मतलब आपको कोई एसेट परचेज करना है, लैंड परचेज करना है, बिल्डिंग परचेज करनी है, या फॉर पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी पे करनी है तो भी कैश जाएगा ना। If you want to pay any liability, then also there will be an outflow of cash and you will pay that liability. So what is expenditure? Anyone? What do you mean by expenditure? जल्दी बोलो, ये चैप्टर हमको 3 दिन में खत्म करना है, so that लास्ट में we get lot of time for final accounts. अभी इसके बाद हम लोग हायर परचेज करने वाले हैं, और हायर परचेज के बाद we'll do final accounts. What do you mean by expenditure? Expenditure means outflow of cash. For what? Outflow of cash क्यों जा रहा है? What is the reason for this outflow of cash? आपके पास से कैश किन किन पर्पसेस के लिए जाता है? What are the purposes for which the cash goes out from your business? To For purchase purchase any of goods or and service, services. Very good. For uh, purchase of goods and services, and to achieve any asset for distribute. for purchase of any asset, for disbursement of any liability. Disbursement means payment of any liability. Disbursement means payment of any liability. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? Now what do you mean by receipt? प्लीज, हाँ, रिसिप्ट का मतलब ये नहीं बोलना कि फीस भरने पे जो रिसिप्ट मिलती है वो। Receipt means what? Receipt means what? What do you mean by receipt? हाँ, रिसिप्ट मीन्स, सबसे होशियार आपके क्लास में प्रणव है। प्रणव, कभी मेरे को मिलना। इनफ्लो ऑफ कैश, रिसिप्ट का मतलब होता है कैश कहीं से आया तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। नॉर्मली रिसिप्ट हम रिसिप्ट वो रिसिप्ट को बोलते हैं जो आपको फीस पे करने पे मिलती है। मैं उस रिसिप्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कौन सी रिसिप्ट की बात कर रही हूँ? रिसिप्ट ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश मीन्स आपके पास कैश आया। कैश कभी कभी आता है। कैश कब कब आता है आपके पास? जब आप सेल करते हो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Yes, ma'am. और कब आता है? ऑटो वाले से जब, एक तो है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप सर्विसेज दे रहे हो कोई, आप गुड्स बेच रहे हो तो आपके पास कैश आएगा।
डायरेक्टली या थ्रू डेटर्स, आइदर वो डायरेक्टली आएगा दैट इज कैश सेल्स, और थ्रू डेटर्स, अगर आपने क्रेडिट सेल किया तो डेटर्स आपको कैश देंगे, बराबर। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर। और कब कब कैश आता है आपके पास? और कब कैश आता है? जल्दी बोलो, और कब कैश आता है? लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट। सेल ऑफ एसेट पे कैश आता है, सेल ऑफ एसेट और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट,